Hi everyone, I am Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 9 of Haloalkanes and Haloarenes in chemistry of class 12th. So, in the previous few lectures, we had finished off with the chemical reactions of haloalkanes. That is, and these were there in the three categories. That is the nucleophilic substitution reactions, the elimination reaction, and the reaction with metals. And so let me just give you a quick recap about what we did in the last lecture. That is lecture number 8. So, in the previous lecture, we discussed about the third category, that is the reaction with the metals, and it was subdivided into two parts. That is one when we are considering magnesium in the presence of dry ether. Okay, the reaction of alkyl halide with magnesium in presence of dry ether, it results in the formation of Grignard reagent. Okay, and we also discussed about the nature of the C and the carbon magnesium bond that is covalent, but it is highly polar, and this is the reason why these Grignard reagents, they are extremely reactive with any source of proton, and they can react to give hydrocarbons. Okay, even with water, even with traces of moisture, they can react to give the hydrocarbons. So this was their application to convert the halides to the hydrocarbons. The second category was the Woods reaction, where we react the sodium in the presence of ether with the alkyl halide, and it results in the formation of a hydrocarbon which has double the number of carbons than the reactant. And then we started off with the reactions of the haloarenes, and that is the first category, the nucleophilic substitution reaction. And uh, we discussed that the reactivity of the haloarenes to these kinds of reactions is very less. And and why? There we discussed several reasons for this. That is the resonance effect, the difference in the hybridization of the carbon atom, the instability of the phenyl cation, and because the electron rich nucleophile, it will face a lot of steric hindrance or a lot of repulsion by the electron rich arenes. Then we saw a reaction in the example of this nucleophilic substitution reaction, in which chlorobenzene was reacting with NaOH, aqueous NaOH, under the very drastic conditions of 623 Kelvin and 300 atm to produce phenols. Okay. And because such drastic conditions, they are difficult to maintain in the industries and all, therefore we look for several ways to increase the reactivity of these haloarenes. Okay, so one such way we discussed was introducing the electron withdrawing group such as NO2 at the ortho and the para positions of the haloarenes. Okay, we discussed the reason in detail, that why the reactivity increases due to the presence of NO2 at the ortho and para positions. Okay, so this was all about the last lecture. Now today we are going to discuss the second category of the chemical reactions of haloarenes, that is electrophilic substitution reaction. Okay, so let's move on. Electrophilic substitution. So what's the difference between the nucleophilic substitution and electrophilic substitution? In nucleophilic substitution, the nucleophile comes and attacks the substrate, that is whether it be haloalkane or haloarene. Okay. In the electrophilic substitution, the electrophile comes and attacks. So because nucleophile is Nu minus and electrophile is E plus, I mean we can denote it as E plus. That means with a shortage of electrons. Okay. So basically it requires, it will attack a substrate which has more of electron density. The more of electron density, the easier this electrophilic substitution reaction will be. क्योंकि ठीक है, तो जैसे E प्लस होगा ना, तो उसे किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनीथिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, ठीक है, तभी तो वो स्टेबल प्रोडक्ट दे पाएगा. ठीक है, so I mean the all the substrates that have the proper or good electron density, the reaction will be easier for that case. Usual electrophilic reactions of the benzene ring, like halogenation, nitration, sulfonation, and the Friedel-Crafts reaction. So these are the
main reactions which are included in this category. We'll discuss them individually also. But first, I will let you know, I will give you a brief introduction of what is happening at the back end. मतलब मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है. So see, in the case of haloarenes, so let me draw the structure first. Suppose I'm drawing Cl like chlorobenzene. This is chlorobenzene, right? So see, in haloarenes, there are two effects which are competing with each other. ठीक है, और जो जीत जाता है the reaction वैसे ही होता है. So see, first we'll be talking about, first one is the inductive effect. तो inductive effect क्या होता है कि in simple terms if we say this is the kind of effect which either it makes that group as electron withdrawing or electron donating. ठीक है, नॉट डोनेटिंग और विड्रॉइंग एग्जैक्टली बट यस, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो मतलब इसलिए भी दो टाइप का होता है. एक होता है प्लस आई व्हेन वी से कि दैट सब्स्टिट्यूएंट, प्लस आई इज व्हेन वी से दैट सब्स्टिट्यूएंट इज ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इट्स गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द अदर टू द ओवरऑल कंपाउंड. ठीक है, तो ये अपने से दूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. ठीक है, और माइनस आई इज व्हेन वी से that substituent is good at attracting or withdrawing the electron density. ठीक है, तो प्लस आई के आपको एग्जांपल्स पता होंगे, जैसे जो सबसे बेस्ट होता है वो अल्काइल ग्रुप्स खुद होते हैं, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया. सो इफ दीज आर प्रेजेंट, सो दे विल try to donate the electron density toward the overall compound. और minus I, that is negative inductive effect, the best examples are the halogens. ठीक है, which we are considering. ठीक है, सो ये जो Cl होता है, इट शोज द नेगेटिव, दैट इज माइनस आई, और द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सो इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग. ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग से विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा. हम ऐसा बोलते हैं टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में, कि दैट हैलोजन एटम और एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हेन इट इज अटैच्ड, इट विल डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग. डीएक्टिवेट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज वन इंडक्टिव इफेक्ट. सो आई एम जस्ट राइटिंग द मेन थिंग ओवर हियर. हैलोजन shows minus I effect, that is withdraws electron density. ठीक है, और इस विड्रॉल की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि जो रिंग होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, मीन लेस रिएक्टिव बन जाती है. डीएक्टिवेट मतलब इन टेक्निकल टर्म्स इट मींस, सिंपल टर्म्स, it means that the ring, the benzene ring has become less reactive for the other reactions to take place. ठीक है, so deactivate the ring. Now second चीज जो इस हैलो एरिन में हो रही है, सॉरी, that is resonance effect. So I have drawn the resonance structures, that is the contributing hybrid structures of these haloarenes so many times in the previous lectures also. So now I am, and every time I have told you, I have discussed this properly, that due to resonance, the electron density at the ortho and the para positions, it increases. Okay, so due to resonance effect, electron density at ortho and para position increases, और मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही रहती है. मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो कम हो रही है, बिकॉज वो ओरिजिनल जैसा था बेंजीन रिंग में वैसा ही रहता है, और एट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन वो नॉर्मल वाले से, ओरिजिनल वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बढ़ जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे, सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, we say that this halogen group is ortho and para directing. Halogen atom is ortho and para directing. ठीक है,
नाउ अब देखो, दिस विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सी, सो ये दो इफेक्ट जो है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस इफेक्ट, दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। ठीक है, दोनों के ही जो रिजल्ट है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट डूइंग? इट इज डीएक्टिवेटिंग द रिंग। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन से दूर जा रही है। ठीक है, तो वो इस तरीके से रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज इज द रेजोनेंस इफेक्ट। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट डूइंग? इट इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो एक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, दूसरा इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, बट स्पेसिफिक पोजीशन पे इंक्रीज कर रहा है, ओवरऑल इंक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज कर रहा है। फाइन। सो बिकॉज द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन नेचर, because the inductive effect of chlorine atom or any halogen atom is stronger in nature, so जो reactivity होती है these haloarenes की towards the electrophilic substitution is less। जैसे न्यूक्लियोफिलिक की लेस थी reactivity due to several other reasons, the reactivity in this case in the electrophilic substitution is also less reactivity because of the deactivating nature, less reactivity due to deactivation। ठीक है, अब आप समझे ना, मैंने बोला था कि E प्लस जो आएगा उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशन चाहिए जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन डीएक्टिवेशन की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, हाँ, कि द हैलोजन एटम इट बिकम्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब ये जो E प्लस आ रहा है, इट विल व्हेन इट विल रिएक्ट, व्हेन इट विल अटैक दिस हैलो एरीन, इट विल गेट अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब जब E प्लस आएगा तो वैसे तो रिएक्टिविटी कम है, सो इट विल नीड some kind of another solvents or some kind of another drastic conditions for the reaction to get to happen। but जब भी E प्लस आएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह को देखेगा, इट विल सर्च फॉर द पोजिशन और द लोकेशन विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो कहाँ पे मिलेगी उसे? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो substitution, so the second point you need to understand is substitution at ortho and para position due to resonance। ठीक है, so these two points they are the result of the competition of both these inductive effect and the resonance effect। ठीक है, so basically the inductive effect it destabilizes the intermediate carbocation which is forming during the reaction, while the resonance stabilizes it। ठीक है, now inductive effect is stronger, so it will cause the net deactivation हो रहा है, and resonance it lowers this deactivation at the ortho and para position of the ring। So in simple terms we say that reactivity is controlled by the stronger inductive effect, क्योंकि फाइनल तो लेस रिएक्टिव हो रहा है ना, सो दैट मीन्स रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाइल द ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन मतलब जो पोजीशन है अटैक की, जो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहाँ की जो पोजीशन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस important statement, that is reactivity is controlled by stronger inductive effect while the orientation is controlled by resonance। So the electrophilic substitution reactions in haloarenes, they occur slowly and they require more drastic conditions as compared to benzene। ठीक है, so now we will do several reactions which come in this category। ठीक है, so the first one is halogenation। halogenation मतलब the addition of halogen। ठीक है, तो already we have a halogen in the benzene ring, this is chlorobenzene। हैलोजनेशन में वी रिएक्टेड विद अनदर हैलोजन जो कि हमें सब्स्टिट्यूट करवाना होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, ये जो रिएजेंट्स है ना विच आई एम राइटिंग अबव द एरो,
They are very important because whenever you will get to write the product, or whenever you will get the series reactions, you will need their help. I mean, you need to remember that which under the presence of which reagents or solvents are required for a particular reaction to happen. Okay. Anhydrous FeCl3, and the product will be, as we discussed, what we discussed was कि ortho और para position पे substitution होता है. ठीक है. So one will be at ortho position plus, and one will be at para position. Obviously, this para position wala product, it will be major. So now, again, when you may ask that why the para product is major, because see, in the case of ortho, when something like this, when addition or the substitution reactions happen, अब देखो यहाँ ये जो दो Cl है in the ortho isomer, these two chlorine atoms, they are very close to each other. ठीक है. So there अभी चलो Cl जो है वो तो फिर भी ठीक छोटा है, मान लो सपोज NO2 होता. ठीक है. अभी हम आगे देखेंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे तो NO2 आके ऐड होगा. सो NO2 इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल. ठीक है. सो in the case of ortho isomers, steric hindrance it comes into place. So because of steric hindrance or the electronic repulsions, you can say ortho product is minor product. Okay, it is not as stable as the para one. Now going to the second kind of reaction, it is nitration. नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर सब्स्टिट्यूट हो रहा है. ठीक है. Now, what reagents you need for this reaction is HNO3, जो कि एक्चुअल में NO2 ग्रुप प्रोवाइड करेगा in the presence of concentrated H2SO4 as an oxidizing agent. ठीक है. These reagents you have to learn, you should remember always. Okay, so one product will be similarly this NO2 at the ortho position plus this is NO2 at the para position. Again, this one will be major because of no effect of the steric hindrance and all. Now coming to another reaction. The third one in this category is sulfonation. Okay, so this is the haloarene. In this, you need simply concentrated H2SO4 and heat or boil. One product at ortho, SO3H, and one product at para, SO3H. I'm writing down the name of this compound just to make sure that you understand what it is called. Because SO3 is at the fourth position, it will be written as 4-chloro-benzene सल्फोनिक एसिड. ठीक है. तो जैसे COOH जब लगा होता है, दैट इज द कार्बोनिक एसिड और द कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही SO3H इज द सल्फोनिक एसिड. ठीक है. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर इन दिस कंपाउंड that SO3H is the main group, that is the principal functional group which is considered here, and Cl को हमने second, like we have taken Cl as a substituent, that is why we are writing sulfonic acid here and 4-chloro. ठीक है. So SO3H, it has a higher preference as compared to the halogen. So it is the principal functional group here. Now the last one is Friedel-Crafts reaction. Plus anhydrous AlCl3 aluminum chloride. ठीक है. AlCl3
अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, मतलब हैलोजन की जगह पे द न्यूक्लियोफाइल वाज गेटिंग अटैच्ड, ठीक है, तो Cl की जगह पे OH आ रहा था, ठीक है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ पोजिशन और अ लोकेशन with more electron density, इस वजह से it is going to the ortho and para position and it is not replacing the actual halogen atom. So this one is the para product and similar ortho, you can write it on your own. So इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो Cl है, I mean we are reacting it with CH3Cl, so this CH3 group is coming and attaching to the ortho and para position. This is COCl and same anhydrous AlCl3 and the product would be, this is C, this is O and this is CH3, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इन फ्यूजन क्राफ्ट रिएक्शन यू कैन रिमेम्बर इट दिस वे कि like it is being reacted with a compound which has a chlorine, which has a halogen atom, ठीक है। तो the compound apart from the halogen atom will get attached, मतलब जैसे यहाँ पे Cl है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है ऐसे, and Cl goes away and the compound which is left apart from chlorine, it will get attached from this carbon only, यहाँ जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहीं से जाके इसी कार्बन से ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन रिमेम्बर इट दिस वे, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मे बी यू नो इन एग्जाम्स दे कैन गिव यू अ वेरी कॉम्प्लेक्स लुकिंग कंपाउंड, ठीक है, और वहां पे आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू रिमूव द Cl एंड ऐड दैट कंपाउंड, ऐड दैट ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। सिमिलरली इसका ऑर्थो वाला आइसोमर, लेट मी राइट डाउन द नेम। सो अगेन हियर आल्सो the CSH3 is the principal functional group, so you will write it as 4-chloroacetophenone as the major. This is a ketone, okay? Ketonic group. So these were the four categories of the electrophilic substitution reactions. Okay? Now, coming to the third category of the reaction with of the reactions of haloarenes, that is a reaction with metals. Okay? In haloalkanes also we had this category, or similar reactions will be here also. So the first one in this is the named reaction, that is uh, it is known as Woods-Fittig reaction, FITTIG, Woods-Fittig reaction. So what happens is a mixture of alkyl halide and an aryl halide is taken as a product, and it is reacted in the presence of dry ether with sodium, and it gives us so just let me write it down first. This is a haloarene, okay, and this is a alkyl halide. तो दोनों में halogen है and this is R, and it is reacted with sodium in presence of dry ether to give this compound, ठीक है, plus NaX. Okay, just to balance, we can write it up this way. Okay, and the second category here is Fittig reaction, FITTIG, Fittig reaction. Two molecules of two Na in presence of dry ether. This is a phenyl ring and it is attached to another phenyl ring, and this compound is known as biphenyl. Okay, because of these two. Now, you must remember that in the last lecture we did the Woods reaction in the case of the reactions of haloalkanes, ठीक है। So
You don't have to like get confused. In देखो, there are three. You can remember it this way. I mean, there was this Woods reaction there. उसमें क्या था? We were taking two RX, right? We were taking two molecules of the alkyl halide और फिर हमें प्रोडक्ट में क्या बन रहा था? एक R और एक R. ठीक है, दो molecules of alkyl halide they were reacting to give us this RR. ठीक है. Similarly, in the case of haloarenes, you have fatigue reaction. इसमें क्या होता है? R की जगह simply phenyl group लगा है. I'm writing it this way so that it would be easy for you to remember कि and understand what is actually happening. ठीक है. So this is uh, two molecules of haloarene. मतलब it is simply this group phenyl with X benzene ring. And what it give? It will give phenyl plus this phenyl attached to phenyl group. ठीक है. This is diphenyl. Now इन दोनों को combine कर दिया है. So we are getting a Woods fatigue reaction. Just it's the combination of these two. इसमें क्या कर रहे हैं? दो मॉलिक्यूल्स सेम नहीं ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं. क्या? एक मॉलिक्यूल वी आर टेकिंग हैलोएल्केन का प्लस अनदर मॉलिक्यूल वी आर टेकिंग हैलोएरीन का. ठीक है. और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी इन दोनों के ही एडिशन से बनेगा. दैट इज फिनाइल और आर. ठीक है. So the basic mechanism of all these three reactions, these three named reactions is same. Only the products and the reactants are different. ठीक है. So you can remember it this way. It's very easy. ठीक है. So now what we will do is we will do several examples related to these topics, and so that you can understand what all reactions happen and what how can you do the questions in the examinations. Because examination में सीधा like direct questions are never asked. I mean it will be in very less number of cases that they will ask you a particular reaction. In general, they will ask you a series of reactions. I mean, they will give you a reactant and they will give you a product. And in between these two, there would be a series of reactions happening, and you'll have to identify ki what all reactants you need to use, what all reactions can happen to make this possible. So we are going to do the examples now. So our first question is, we have to identify A, B, C, D, E, R and R prime in the following reactions. I'm going to write down the reactions and you need to identify what is happening there. Okay, so this particular question is very exciting. RBR plus Mg and dry ether will give C. D2O here it is D. This D is not the D that you have to identify. This D is not a group. It is simply an isotope of hydrogen. You know, you must have studied earlier that hydrogen has isotopes, that is hydrogen, deuterium, and the other ones. So this D is deuterium. And then we have the last one. Okay. These are the overall reactions. And now you have to identify. So let's start with the first reaction. Okay.
Let's start with the first reaction. We have it is of the form Rx plus Mg. And whenever you see dry ether, no, you just have to just आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम ग्रिग्नार्ड reagent के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? Because this is the only place that is a manufacturer of Grignard reagent. That is the only place where we use dry ether. ठीक है? तो yeah, this is of the form Rx plus Mg. It will give RMgX, the Grignard reagent. ठीक है? तो यहाँ पे भी फॉर्म वही है, so इसका मतलब है A will be, A क्या होगा? हमारा R is this group and इसकी जगह पे MgX, Mg Br and this simply is R. ठीक है? Now A is giving it is reacting with water to give D. तो अब हमें पता है कि Grignard reagent whenever it reacts with the water, with the traces of water, it can give the hydrocarbons. ठीक है? So simply वो I'm writing the general reaction over here just to make you remember. RMgX plus water, it will give, जो भी ये R ग्रुप होगा ना, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ग्रुप होगा R, उसी में H लग जाएगा एंड वो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. और द अदर थिंग दैट इज रिलीव्ड इज MgOH. फाइन. सो हियर अब आप बताइए B क्या होगा, बिकॉज A हमारा क्या है, ये है. इसमें R ग्रुप क्या है, ये जो रिंग है ना, क्लोज रिंग साइक्लोहेक्सेन, दैट इज द R ग्रुप. ठीक है? तो क्या होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी RH. तो दिस विल बी अ सिंपली क्लोज रिंग. ठीक, यही होगा. प्लस the other product that will be formed here is NaOH-Br. Fine. Now coming to the second reaction. Now again, this is also of the form RMgX, like Rx plus Mg. So this we can understand that C is the Grignard reagent. Now because we don't know R, ठीक है, हमें R तो पता नहीं है, तो हम C कैसे पता लगा सकते हैं, बिकॉज C जो है वो R पे डिपेंड करता है, राइट? नाउ वी सी द सेकेंड रिएक्शन. इसमें हमें प्रोडक्ट बताया गया है. द प्रोडक्ट इज रिवील्ड ओवर हियर, दैट इज CH3, CH एंड CH3, और ये D लगा हुआ है. ठीक है? सो व्हाट डज दिस मीन इज वी आर रिएक्टिंग इट विद D2. ठीक है? तो D इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है? तो H2O की जगह पे हमने D2O लिखा हुआ है. ठीक है? व्हाई डू वी टेक दिस, जस्ट टू डिफरेंशिएट. मतलब अगर देखो यहाँ पे H2O लिया होता तो यहाँ पे D की जगह पे H आ जाता. ठीक है? फिर हम लोग we will not be able to differentiate कि which of the hydrogen has been added. ठीक है? which of the hydrogen has been added uh, from this H2O molecule. So just to differentiate whatever atom is being added here, हमने यहाँ पे H2O की जगह पे D2O यूज किया है. ठीक है? बाकी पूरा मैकेनिज्म एंड बैकिंग थिंग कॉन्सेप्ट सेम. ठीक है? तो इसका मतलब है कि H यहाँ पे लग रहा है, इस वाले मतलब बीच वाले कार्बन एटम पे H लग रहा है या फिर D लग रहा है. ठीक है? ऐसे. तो दैट मीन्स कि हमारा जो R ग्रुप रहा होगा वो क्या रहा होगा, हमारा जो इन द केस इसमें जो C है, C क्या होगा, R क्या होगा, दिस दिस दिस. ठीक है? और इस पे D लगा है, तो पहले D नहीं लगा होगा इस पे, यहाँ पे क्या होगा, MgX लगा होगा. ठीक है? तो C विल भी यहाँ पे इसकी D की जगह पे MgX, दैट इज MgBr. तो ये C हो जाएगा. अब C इज द ग्रिग्नार्ड रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब अब ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने के लिए विच RBr डू वी नीड. ठीक है? तो ये जो R है दैट इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है? हमें R भी आइडेंटिफाई करना है ना, जस्ट रीड द क्वेश्चन. तो ये जो R है दैट इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप. दिस. ठीक है? तो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंड दिस इज नोन एज द आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसोप्रोपेन क्या होता है, इट्स द आइसोमर ऑफ प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल ग्रुप. नाउ कमिंग टू द लास्ट. इसमें भी see the direction of arrows is important, that our reactant is R prime X and we are reacting it with Na in dry ether, obviously Na, to give this compound.
the product. You can see that the product is very big. ठीक है. Now you must remember कि in the case of haloalkanes, whenever we react the haloalkanes with sodium, we are talking about the वुड्स रिएक्शन. ठीक है. तीन ही कैटेगरी होते हैं, हमने पढ़ा था मेटल्स के लिए. एक होता है वुड्स रिएक्शन, एक होता है फिटिक रिएक्शन, और एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन. ठीक है. तो क्योंकि ये एल्केन है, आई मीन इट्स द बेंजीन रिंग इज नॉट इन्वॉल्वड हियर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वुड्स रिएक्शन. नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि द प्रोडक्ट इट हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. ठीक है. क्योंकि दो कंपाउंड ऐड हो रहे होते हैं, दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, और फिर आर डैश आर बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी वो रिएक्शन हो रहा है और वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका मतलब जो कंपाउंड रहा होगा वो सिंपली यू हैव टू, क्योंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड ही बनेगा हमेशा क्योंकि दो ऐड हो रहे हैं. ठीक है. तो उसको आपको यहाँ बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है एंड यू गेट द आर डैश आर प्राइम ग्रुप. तो आर प्राइम ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे ऊपर दो सी एस टी लगे एंड दिस इज, यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है. कार्बन इज नॉट प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर. ठीक है. यहाँ पे कुछ भी एक बॉन्ड होगा एंड दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्योंकि इसमें चार कार्बन है बस. एंड इट इज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल ग्रुप. ठीक है. यहाँ पे कुछ भी लग सकता है. ठीक है. दिस इज एम्प्टी. आ प्राइम. नाउ डी. डी कैसे पता लगाएंगे, अब हमें आ प्राइम पता चल गया और यहाँ पे एक्स लगा है. ठीक है. तो इस वाले पोजीशन पे जो ये एम्प्टी दिख रहा है एक्चुअल में यहाँ पे एक्स लगा हुआ है ऐसे. ठीक है. तो so this is Rx plus Mg. D will be the Grignard reagent. तो यहाँ पे Mgx लग जाएगा. ठीक. Now E will be, जब हमने when we will react the Grignard agent with water, what we will get? The corresponding alkane. ठीक है. तो Mgx की जगह पे H लग जाएगा और कुछ नहीं होना है. ठीक है. इसका मतलब जो कंपाउंड आ जाएगा दैट वुड बी, ठीक है, यहाँ पे भी C है. ठीक है. तो ये इस तरीके का कंपाउंड आ जाएगा बिकॉज देयर आर फोर. सो दिस इज आइसोब्यूटेन. ठीक है. The isomer of butane, isobutane. Now, so this was a question. This was a little interesting question. Now we will try to do another questions also. Now I'm starting the conversion reactions. As I told you, they are generally asked in the exam to just make you understand that how these type of questions are have to be attempted. Okay. Suppose if you are given the question that you have to prepare but one ion from ethanol. ठीक है. तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम इथेनॉल, मतलब क्या है, C2H5OH, राइट. यहाँ पे क्या करना है हमें, CH3CH2OH. ठीक है. तो हमें क्या बनाना है, हमें अल्कोहल से हमें एल्काइन बनाना है. ठीक है. मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ब्यूट वन आइन, सो वी नीड टू गेट द ट्रिपल बॉन्ड. तो वेन एवर यू हैव टू मेक ट्रिपल बॉन्ड, रिमेंबर दैट ट्रिपल बॉन्ड द बेस्ट वे is to go through the halogen, that is alkyl halides. Alkyl halide group के through जाके we can induce a double bond and we can also induce a triple bond. ठीक है. So what we will do is we have been given two reactants. ethanol है हमारे पास और इथाइन है. तो इथेनॉल से क्या करवाएंगे सबसे पहले, अगर अगर हमें हालो एल्केन बनाना है तो द बेस्ट वे इज SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. ठीक है. दिस इज द बेस्ट वे. So this will be simply CH3, CH2, Cl, and SO2 with HCl will escape. So we are left with this thing. Now we have ethyne. तो क्या करेंगे, एथाइन लेंगे. I mean this is a triple bond plus this is in presence of liquid ammonia.
what will happen? H C triple bond C minus Na प्लस. ठीक है, तो ये NaNH2 का जो Na है that will replace this hydrogen atom in the ethyne molecule. ठीक है. So now this is a very important reaction. Although I have not taken this reaction, I have not taught this in this chapter, but it comes in the chapter which is related to the reactions dealing with alkynes. ठीक है. तो alkyne से अगर we have to react them. I mean, you'll get it in this chapter when you can react these alkynes with the haloalkane, and similarly you can get the product. तो अभी uh, you can see here that we will take this product जो पहले वाले reaction से बना haloalkane और जो दूसरे reaction से बना, we will take both these molecules and we will react them together. CH3Cl plus दोनों ऐड हो जाएंगे. क्यों? ये. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट दैट इज ब्यूट वन आइन. ठीक है, यही हमें प्रिपेयर करना था. दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Now, one thing you have to notice here in the question is that you have been given ethanol and ethyne. That is the reactants they are containing two carbon molecules. Both. Ethanol में भी दो कार्बन है, ethyne में भी दो कार्बन है. ठीक है. But the product that is being asked is but1-ine. That is, it has four carbons. ठीक है. So you must understand that where are these that from where these two extra carbons they are coming. ठीक है. तो आपको ये वाला जो रिएक्शन है, दीज टू रिएक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दीज टू रिएक्शन. ये आगे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस में दे कम कि व्हेन वी आर रिएक्टिंग दिस विद NaNH2, सो Na रिप्लेस हो जाता है एंड दिस कंपाउंड बिकम्स रिएक्टिव. ठीक है. एंड व्हेनेवर हम इसे किसी भी और हेलो एल्केन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये पूरा पूरा कंपाउंड ऐड हो जाता है. मतलब Na और Cl तो आपस में चले जाएंगे. ठीक है. Na एंड Cl विल गो टुगेदर एंड बाकी जितना के कंपाउंड्स है दे विल अटैच टुगेदर. उतना दोनों आपस में अटैच रहेंगे. ठीक है. तो अगर ये Cl मतलब ये जो CH3CH2Cl है, ये हेलो अल्काइल हेलाइड है. इस अल्काइल हेलाइड की जगह पे अगर सपोज करो तीन कार्बन वाला अल्काइल हेलाइड होता. ठीक है. तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी वी वुड गेट 5 कार्बन एटम्स. ठीक है. सो दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हम हमें कितने कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं. We can simply just manipulate the chloride that we are using, manipulate the alkyl halide that we are using, and we can increase the same number of carbon atoms in our product. ठीक है. Now similarly going to the another conversion, we have to convert propene to 1-nitropropane. ठीक है. So see here both the मतलब the reactant and the product both have propane. मतलब the number of carbon atoms in both are same, so we don't need any such kind of addition reaction. ठीक है. तो हमें क्या करना है, we just have to add a मतलब remove the double bond and add nitrogen. वो कैसे करेंगे? That is this way will also include the alkyl halide. तो हमें पता है ना कि how to prepare alkyl halide from propene. We have done this reaction in the class during the preparation of alkyl halide. प्लस HBr. ठीक है. जहाँ पे हमने मर्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ा था, राइट. तो मर्कोनिकॉफ क्या कहते हैं कि H विल गेट अटैच टू अ पोजीशन और टू अ कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे H लग जाएगा और बीच वाले पे Br लगेगा. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इज हमें NO2 लेके आना है ना इसमें. और फिर तो NO2 कैसे ऐड करेंगे टू दिस अल्काइल हैलाइड व्हेन यू रिएक्ट द अल्काइल हैलाइड विद AgNO2. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. आई मीन आई रिमेम्बर आई हैड ड्रॉन अ टेबल
इसमें मैंने खूब सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे थे, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स लिख रखे थे, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. So you can go to that table and you can see ki what to do if you have to replace any halide atom with a NO2. Like if you want to get NO2 in place of halide, then which reagent you need to use, and that will be AgNO2. So we are using the same thing here, CH, CH3, and in place of Br we will get NO2. ठीक है, and in terms we will get AgBr. Now see the product. What we required was one nitropropane, but what product have we got? We have got two nitropropane. ठीक है, we have got two nitropropane. So अब दिक्कत like where was the mistake? I mean, I need you to think it for 10 seconds and just think that where did we do a mistake? How can we get one nitropropane instead of this? ठीक है, okay, so let me tell you how can we get is if we use peroxide over here. ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया था? वी अप्लाइड Markovnikov's rule. That was the mistake. ठीक है, if we can use peroxide over here, then we need to apply anti Markovnikov's rule. ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा, मतलब Markovnikov रूल उल्टा हो जाता है. ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट इज ये जो बी आर यहाँ ऐड हो रहा था, अब कैसे एडिशन होगा? H will get add to this मिडिल वाला कार्बन एंड Br will add to this लास्ट वाला कार्बन. ये बन जाएगा. सिमिलरली अब जब Br यहाँ पे है लास्ट मतलब फर्स्ट कार्बन पे, तो उसी की जगह पे NO2 भी आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज NO2 एंड दिस इज CH2. ठीक है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सो दिस इज वन नाइट्रोप्रोपेन, द प्रोडक्ट दैट वी वांटेड. ठीक है, तो इसका मतलब आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, want you to understand that we can manipulate the results. I mean, if we want any group at the carbon number 1, or if we want any group at the carbon number 2, then how can we manipulate the reaction to happen such, to produce such products? If you want to apply for Markovnikov, then go without peroxide. And if you want to go for anti-Markovnikov's rule, then use peroxide as a reagent. Okay? Now, we shall do one more conversion today. Now, the third one says we have to convert ethane to bromoethene. मतलब हमें डबल बॉन्ड भी लेके आना है एंड वी हैव टू गेट द ब्रोमीन एटम आल्सो. तो हाउ टू गेट दिस? तो सबसे बेस्ट, like this is an alkane, right? So you can go to the section where we discussed about the preparation of haloalkanes from alkane. ठीक है, so we had done this. So कैसे करते हैं? Let me make you revise. Alkane, and you react with the corresponding halogen atom in presence of UV light. ठीक है, तो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन होता है यहाँ पे, and simply you will get Br will add over here and HBr will be the another product. Now what you have to do is you have got the alkyl halide, right? But you want to get bromoethene. ठीक है, मतलब बीच में आपको डबल बॉन्ड भी चाहिए. वो कहाँ से आएगा? So what we will do is whenever you react the alkyl halide with alcoholic OH, ठीक है, alcoholic OH क्या करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं ना. वी डिस्कस कि aqueous KOH it favors the substitution, nucleophilic substitution reactions, and alcoholic KOH in turn it favors the elimination reaction. तो यहाँ पे भी वो elimination करवाएगा और 1H from this carbon and 1 Br atom from this carbon eliminate करवा देगा and we will get a double bond. So alcoholic KOH को यूज करके हमने alkene बना लिया है. नाउ अब हमें इस alkene में एक Br एटम चाहिए, राइट? हम क्या करेंगे?
there is a reaction uh, in the section where alkenes they are discussed. So when you react alkene with a corresponding halogen in presence of CCl4, that is carbon tetrachloride, so डाइहैलोजनेशन हैपेंस. डाई मतलब दोनों तरफ ये जो Br2 इन सिर्फ Br2 से करेंगे, ठीक है, तो मे बी एक बार, लेकिन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करेंगे, सो दोनों कार्बन आइटम पे Br लग जाएगा एंड दैट विल बी, we will get CH2, CH2, the double bond has been removed एंड दोनों जगह पे सिंपल डाइहैलोजनेशन हो गया दोनों कार्बन पे. So this is dibromoethane. Fine. Now, बट हमें प्रोडक्ट हमारा क्या है, ब्रोमोइथीन, मतलब हमें डबल बॉन्ड में चाहिए और एक ब्रोमीन हटाना है. ठीक है, कैसे रहेंगे, सिंपल, अगेन डू फॉर गो फॉर एलिमिनेशन. एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, अगेन अल्कोहलिक यूएच. जब भी एलिमिनेशन करवाना है, ठीक है, मतलब कि हमारा हैलोजन आइटम भी चला जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है, दीज टू थिंग्स, तो हमेशा गो फॉर अल्कोहलिक यूएच. ठीक है, जिससे कि एक Br चला जाएगा और एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा. ठीक है, so this is the product, that is, this is bromoethene, and it is what is required. So these are the series reactions. इसमें हमने क्या सीखा कि alcoholic UH is a very important reagent that can be used to get a double bond, that can be used to get an alkene from an alkyl halide. ठीक है, and this reaction which is happening in presence with bromine in presence of CCl4, this is giving us a dihalogenated product. ठीक है, so this reaction is also important. We have not discussed in this chapter because it is related to alkenes, right? But this can be a very helpful reaction when you are doing the series questions, okay, or the conversion questions. So these were the few conversion examples. Now in the, because we have finished with the reactions of haloalkanes as well as the reaction of haloalkenes, in the next lecture we will go on to discuss something about the polyhalogen compounds. Okay, so that will be a theoretical class and we will discuss some examples also. That is all for today. Thank you, class.